So, as you guys told yourself कि हमारे पास when it comes to pressure, Yes, either we have pressure in solids or in liquids. pressure in liquids. When it comes to pressure in solid, the formula is given as force per unit area. When it comes to pressure in liquid, it's equals to rho g h. ठीक है? This represents density. This represents gravity. And this represents height of the liquid, which I know. means if any of this is changed, the pressure would be affected. If none of it is changing, there would be no effect on the pressure of liquid. Same goes for the pressure in solid, that as told by Ahmed in the beginning of the lecture, the pressure in area has an inverse relationship. So this is the relation that the examiner mostly discusses in the question. So where area is greater, pressure would be Smaller. low, and vice versa. ठीक है? अब क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी गेट द इक्वेशन दैट वी आर सीइंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस. सो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि प्रेशर इज इक्वल्स टू एफ ओवर ए होता है. एफ किसके इक्वल होता है? डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी के ओवर एरिया. एम किसके बराबर होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के. Yes. ओके. एंड वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? एरिया इंटू Mass. हाइट के. ठीक है. So area से cancel out हो गया. We got this equation rho g h. Pressure is a scalar quantity and it has a unit of Pascals. pascals, which is equals to Newton per meter square. ठीक है? I think so. Yeah, that's pretty much what we need to know about pressures. Do remember, I think so. We have discussed that rubbers do not follow Hooke's law. Only springs Yeah, follow law. And the reason yeah, behind only that is difference. okay, rubbers do not have elastic limit or anything like that. They just stretches and come back or either break. They only have friction limit. There is another one thing that you need to keep in your mind is ductile and brittle and ductile substances. You might have studied that in chemistry as well. Substances that break right after elastic limit are known as brittle. ठीक है? And substances which enters into plastic region. इलास्टिक लिमिट के बाद ना प्लास्टिक रीजन आता है क्योंकि परमानेंट चेंज इन शेप आ जाती है ना हमारे पास. ठीक है? आर डक्टाइल substances. Do you understand the meaning of brittle and ductile? Yes. ये जो इलास्टिक लिमिट के फौरन बाद ब्रेक डाउन हो जाएंगे, दे आर नोन एज. बाकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एट टाइम्स वैल्यूज को डिस्कस किया जाता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू नॉर्मली जो है, यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर इट, बट सिंस इट्स वेरी इजी सो उसको हम याद कर लेते हैं. इट्स 1.0 × 10⁵ पास्कल्स होता है. दैट इज द प्रेशर दैट एटमॉस्फेयर exerts on us. ठीक है?
How do the atmosphere have this pressure? It is because the gravity pulls the particle in the atmosphere. तो जब वो पुल करती है डाउनवर्ड, so they exert a pressure on us. ठीक है? Do we have any question up till here? No. I am going to repeat one point again, that for liquids, which was the formula rho gh, if we have containers of this shape like this, okay, they all have same level of liquid and same So liquid the in pressure the will be the same. the pressure would be this. ठीक है, ये थोड़ा सा इट सीम्स लाइक Okay. ये थोड़ा सा ऊपर है, मतलब हमने सेम लेवल पे स्टार्ट करना है. जस्ट you So the got the idea shape, what I'm trying to say. It doesn't matter what the shape is, if the density is same and the height is same, volume does not affect. Okay, okay. so volume is not going to affect anything into it. This case, you could also use a formula P1 is equals to P2 in case the pressure is same on either sides. So pressure का formula क्या होता है? F1 over A1 is equals to F2 over A2. So F2 at over times A2. you can go for this formula as normally these kind of a question you could have to solve here. And the one which I was telling you about, K, the shapes, no matter what the shape of the container is, if the level is same in all of it and it's the same liquid, the pressure would remain same. So as we go deeper The and same. deeper, the pressure would increase. As we go higher and higher, the pressure would decrease. Because the density decreases as we go up and density increases as we go down. Sorry, density decreases as we go up and height increases as we go down. That's why pressure is increased and decreased while going up and down. Okay? Going up the mountains. Just my mountains ka, I'm talking about the mountain. Going up. So whereas H increases down, going down. So pressure would increase. Let's see from here as well. Tensile forces, tensile stress. We have discussed about it now. Always keep these graphs in your mind. Okay? They both follow Hooke's law up till this point, and after this, there's a permanent change in shape. And when we remove the force, the object never passes through the origin. This indicates that object में permanent change in shape आ गई. So they could ask you to discuss the graph as well. ठीक है? So we are going to go with this one. The ones which are obeying Hooke's law, उनका straight line graph आता है हमारे पास. Elastic limit के बाद क्या आती है? Plastic limit आती है हमारे पास. And then there are so many other limits as well, which we do not need to discuss. Yes. Clear? Yes. Yes. So we have, उन्होंने बोला कि in which container the pressure on the base would be greatest. किस में होगा सबसे ज्यादा pressure? Density सब में same है. सॉरी, ऑयल की ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी एंड डी में से हम लोग लेंगे. D. बट नहीं, उसने डेंसिटी मेंशन आउट की हुई है. Also सॉरी, B. सॉरी, डेंसिटी उसने मेंशन आउट की हुई है. क्यों? हाइट तो सबसे ज्यादा किस में है? ए में. हमने वॉल्यूम पे थोड़ी जाना है. वी नीड टू सी फॉर डेंसिटी, ग्रेविटी एंड हाइट. ग्रेविटी सेम, डेंसिटी सेम, हाइट सबसे ज्यादा किस में आ रही है? ए में.
तो प्रेशर भी किस में होगा Oh, सबसे ज्यादा? ए में। sorry. सेम गोज फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें ग्रेटेस्ट प्रेशर किस में होगा? किस पॉइंट पे? यस। ए D. एंड बी को तो हम देखेंगे भी नहीं। ठीक है। वाई इज Yes. दैट? बिकॉज फ्रेश वाटर जो है वो Because लेस it's डेंस less है। dense. विल गो फॉर सी एंड डी। सी एंड डी में से कौन सी ऑप्शन जाएगी? डी, बिकॉज वो डीपेस्ट है। D. Yeah. देन हमारे पास टू प्रिवेंट, हाँ, व्हाई डज दिस प्रिवेंट दिस बिगर एरिया, व्हाई डज इट प्रिवेंट द सीमेंट मशीन फ्रॉम सिंकिंग? Okay. A. क्लियरली। क्या पहले रीजन तो बताए ना? लेटर ऑन देन विल गो फॉर द ऑप्शंस। बिकॉज बिगर एरिया लीड्स टू लेसर Big, प्रेशर। less person. Yeah. तो हम कौन सा ऑप्शन में जाएंगे? दिस इज गिवन इन ऑप्शन Yeah. नंबर ए। ओके। Liquid X has a density of this, liquid Y has a density of this. The liquids are poured into tubes. Y की डेंसिटी कम है, X की डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है। तो which would have the bigger value? A. Because X की डेंसिटी ज्यादा थी, तो हमें X और वाले उसमें जाना था। So that's C in और A D तो and C. cancel out हो गए. Yeah. ठीक हो गया? All we need to do is to go for A. I want कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए कहीं पे, ताकि थोड़ा सा उसमें चेंज आए नेचर ऑफ क्वेश्चंस में। Let's see if I could find a few questions from him. It's 1 point. Point eight, 181. Oh, yeah. Okay. फर्स्ट थिंग उससे बोला कैलकुलेट द प्रेशर। उसने एरिया भी दिया हुआ है हम लोगों को, एंड इट्स फोर्स इज ऑल्सो गिवन। क्या फॉर्मूला लगेगा? So 84 over 6.6 times 10 power negative 5. माइनस। Yes. What would be the answer? 64, no, 84 times 10 power. अच्छा, अभी बोल रहा है, मैं उतनी आंसर बता रहा हूँ। 140,000. 1 4 0 0? Yes. अच्छा, अब उसने No, बोला स्टेट द more. वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द पिन ऑन द आर्म। 140,000. One more zero. हाँ जी। One more ठीक, zero. इसमें कौन सा लॉ लगाएंगे हम लोग? उसने क्या फिंगर पे उस पे कौन सी फोर्स लगेगी? सिंस वी नो कि एक्शन रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो Direction. हमारे पास क्या वैल्यू 84. आएगी? एग्जैक्टली 84 ही रहेगी हमारे पास। सही, ऊपर वाला 140,000 है, 114. चलो बस अपनी यूनिट्स लिखते हैं। फिर एक्सप्लेन व्हाई द पिन कॉजेज मोर पेन इन द मैन्स थंब देन इन फिंगर। Because the तो थंब का surface एरिया ज्यादा area is था। small. हाँ, it Yeah. has to do with the area. So same force on smaller
area eight, leads to bigger pressure. more pressure. 2 मार्क्स, 2 पॉइंट्स आ गए। सेम फोर्स भी आ गया, बिगर प्रेशर भी आ गया, 2 मार्क्स गेन। अब उसने कैलकुलेट करने को बोला है प्रेशर। वी हैव डेंसिटी, वी हैव हाइट, सिंपली क्या लगा देंगे, रो जी एच, 1000 टाइम्स 9.8 टाइम्स 3। लेट्स से इसको 10 ही कंसिडर कर लेते हैं फॉर सिंपलिसिटी, ताकि हमारे पास आंसर आ जाए। तो 30,000 30,000, बन जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, 3 × 10 3 raised to times power 10 4 pascals, because always go for scientific notations। scientific. यहाँ पे भी हम इसको क्या लिखेंगे, 1.4 × 10⁵ pascals। We would not go for the longer answers। Yes. अच्छा जी। नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड अस, दे हैव गिवन द एरिया, प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है अगेन। So force over pressure, अब उसने क्या बोला or we है, have another pool has the same depth of water but has twice the area, state the pressure of the water at the bottom। तो अगर डेप्थ सेम है, एरिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, प्रेशर वुड रिमेन द सेम। ठीक है, दैट इज क्या था, बैक आंसर आया 3 × 10⁴ पास्कल्स। देखो, उसने कहा इट हैज द सेम डेप्थ, प्रेशर हैज अ फॉर्मूला ऑफ रो जी एच। तो एच नहीं चेंज हुआ, रो नहीं चेंज हुआ, जी कभी भी चेंज नहीं होता, तो हमारे पास कभी भी कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं है। सर अगर ओके, ये क्वेश्चन सॉलिड्स में होता तो फिर फिर चेंज करना, होता ना। फिर हमें करना। Now they have given us density, they have given us volume. We have to calculate the mass. Density is equals to mass over volume. So mass is equals to density into volume. So we Density would times put it 1000 into 0.001। So 3 zeros से cancel out हो जाएंगे, I guess 1 kilogram आंसर आ जाएगा। Work done we have not done yet, so we're going to skip that। Power भी हम लोगों ने नहीं की हुई। Let's do go to the pressure। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है सॉलिड्स के केस में? F over A। नहीं, हमारे पास रो जी एच सब कुछ है ना, तो हम रो जी एच यूज कर लेते हैं। Also density times हाइट तो हमें कहीं भी नहीं कैलकुलेट करनी पड़ी। सो दिस मीन्स, नहीं हाइट उसने हमें नहीं दी, हाँ दी हुई है 0.8। ठीक है, तो डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी टाइम्स हाइट, ऊपर ही चल देते हैं, डाटा सारा ऊपर ही लिखा हुआ। 1000 टाइम्स 0.